देनी है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are in good health. I am Muhammad Samir Javed, final year student of Food Science and Technology at University of Karachi. I welcome all of you to our YouTube channel QA Learning Hub. If you guys are new to the channel or you have not subscribed it yet, kindly subscribe the channel and also hit the bell icon so you don't miss any update in the future. So, first of all, let me know if I am audible to you or not. Can you people hear me? क्या आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? You guys can reply me in the chat box. Let me know if I am audible to you. I'm waiting for your feedback. Okay, thank you for your feedback. As you all know, QA Learning Hub is an educational platform to learn all the industrial practices, and we frequently upload different videos and conduct live sessions to spread the knowledge. Alhamdulillah, we have successfully conducted 18 live sessions previously, and this one is our 19th live session. The topic of this training session is dietitian, nutritionist, and food technologist, how similar or different they actually are. The duration of this training would be 1 hour. We have planned to start the training at 8 p.m. sharp, and we are around 8 minutes before our time. We received much registrations, so let's wait for other people to join so we can continue our session and start it formally. Around 18 people are watching us right now. So let's wait for some more people to join so that we can continue. I request all of you to please take these sessions seriously so our efforts for these free sessions will bring some true benefits. Moreover, kindly join our Facebook page and WhatsApp groups as well, because all the links like attendance and other links will be shared on those groups before we start the training. So kindly join the groups and stay connected with us. अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे लिंक्स अटेंडेंस एग्ज़ाम और अदर लिंक्स जो हैं वो उन ग्रुप्स पे शेयर किए जाएंगे, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन दोज ग्रुप्स.
I would again request you to please join our Facebook page and WhatsApp groups because all the links, like attendance and other links, will be shared on those groups. So it's very important to join those groups. And most importantly, if you people haven't subscribed to our channel QA Learning Hub, so please subscribe it because in the future you will be updated with all the recent things, and do not forget to hit the bell icon so you don't miss any update. Our trainer for this training is Miss Ramsha Siddiqui. She is a registered dietitian nutritionist trained from Aga Khan University Hospital, Karachi. The topic for today's training session is dietitian, nutritionist, and food technologist, how similar or different they actually are. This would be a 1 hour training. Please be attentive, everyone. This is your attendance time. Attendance link will be shared shortly on the groups. Please be attentive. Attendance link has been shared on Facebook and WhatsApp, so kindly mark your attendance. It is very important to mark your attendance. WhatsApp और Facebook पे attendance का link share कर दिया गया है. So I request every one of you, please mark your attendance and get back soon. Those who are done with the attendance can comment in the chat box. You can write present if you're done with your attendance. Please let me know in the chat box below if you're done with your attendance so that I can proceed. I again repeat, it is very important to mark your attendance. So please get back soon after marking your attendance. Okay, great. I'm getting the feedback. Our trainer for this training is Ramsha Siddiqui. She is a registered dietitian nutritionist trained from Aga Khan University Hospital, Karachi. We are about 1 minute before our time and around 25 people are watching us right now.
It's exactly 8 p.m., so I request our trainer, Ms. Rimsha Siddiqui, to please, ma'am, begin with your session formally. Over to you, ma'am. Thank you so much, Samir. Assalamu alaikum, everyone. As Samir gave you all my introduction, my name is Ramsha Siddiqui, and I am a registered clinical dietitian currently working at the Indus Hospital, Karachi. And I thank QA Learning Hub for giving me an opportunity today to have this session with you all. And I hope कि आज के जो सेशन है वो सबके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के टॉपिक के हवाले से वो सारे क्लियर हो जाएंगे. आज का जो हमारा सेशन है, ट्रेनिंग सेशन है, उसका टॉपिक काफ़ी आई वुड से सिंपल है, बट येट अगेन इट इज़ समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीपल एंड लोगों को इस हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं. I have seen a lot of even dietitians who do not understand the difference between uh, a nutritionist and a dietitian, the aspiring dietitians उनकी बात कर रही हूँ जो कि समझते नहीं हैं इस फर्क को कि when we would graduate what would be our credential, हमारा job title क्या होगा एंड इसका बेसिक डिफरेंस क्या है डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का, या अक्सर इस टर्म को वो लोग बहुत इंटरचेंजेबली जो है यूज कर रहे होते हैं. सो दिस इज व्हाट द रीजन व्हाई आई चोज दिस टॉपिक. एंड दूसरी बात ये कि देर आर अ लॉट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो कि मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे अप्रोच करते आए हैं एंड दे like ask me कि whether they can अप्लाई इन द जॉब्स जो कि डाइटिशियंस के लिए होती हैं या न्यूट्रिशनिस्ट के लिए होती हैं. तो इस हवाले से मुझे इस चीज़ का एक अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स जो कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और जो खुद डाइटिशियंस भी हैं, उन्हें ये डिफरेंस नहीं पता कि क्या हमारा जॉब स्कोप है, क्या हमारी लिमिटेशंस है और ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट में होती हैं और कौन सी स्किल्स हैं जो कि एक डाइटिशियन में होती हैं जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की जॉब नहीं कर सकते, या कौन-कौन से एरियाज़ हमारे सिमिलर हैं एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जॉब. तो इस हवाले से जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन है. इसलिए आज का ये टॉपिक हमने डिसाइड किया फॉर टुडेज़ ट्रेनिंग. आज के इस टॉपिक पे हम बेसिकली 3 चीज़ों को कवर करेंगे, जो कि सबसे पहली है प्रोफेशनल आइडेंटिटी. लाइक आई सेड, आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डायटीशियन, अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट. इन तीनों की प्रोफेशनल आइडेंटिटीज एक दूसरे से कितनी डिफरेंट हैं और कहाँ-कहाँ सिमिलैरिटीज हैं. एक तो हम ये बात से कवर करेंगे. सेकंड हमारे रोड मैप में होगी एकेडमिक pathway, like how exactly do you become a dietitian, a nutritionist, or a food technologist, what studies or what undergraduate or postgraduate trainings or programs you have to study in order to become one. And third, what exactly are your scope of practices, in what areas of work you're going to apply, where you are required, क्या आपके जो है जॉब टाइटल्स हैं. इस हवाले से हम एक छोटा सा ब्रीफली हम इसे कवर करेंगे आज के प्रेजेंटेशन में. So I would start with the very first profession of our topic, and that's a dietitian. एक dietitian होता कौन है? Who is a dietitian? Dietitian basically एक वो हेल्थ प्रोफेशनल है जो कि अपने लोगों को, अपने पेशेंट्स को मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी प्रोवाइड कर रहा होता है. डाइटिशियन बेसिकली हेल्थ के हवाले से ही जो है बात कर रही होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि डाइटिशियन का टारगेट पॉपुलेशन हेल्दी पीपल के साथ साथ डिजीज्ड पॉपुलेशन भी है. यानी कि ऐसे पेशेंट्स हॉस्पिटल में जो कि किसी मेडिकल कंडीशन के साथ आए हुए हैं, लेट्स सपोज डायबिटीज और हाइपरटेंशन या फिर एनी किडनी डिजीज, इसके साथ साथ कोई ऐसे पेशेंट्स जो कि किसी इलेबरेट सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरे हों, उन तमाम कंडीशन के साथ साथ होने वाली जो पॉपुलेशन है जो कि हॉस्पिटल में मौजूद हो या कॉमनली किसी आई वुड से इंस्टीट्यूशन में इनरोल्ड हो, वहाँ पर डाइटिशियन अगर उन्हें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसल्ट करती है तो ये डाइटिशियन की jurisdiction होती है. Dietitian is not just about diet. A dietitian thoroughly studies the drugs, कि कौन सी ड्रग्स उस पेशेंट को दी जा रही हैं, कौन सा प्रोसीजर उस पेशेंट का हुआ है, उस प्रोसीजर की वजह से उसकी न्यूट्रिशन नीड्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, या उस प्रोसीजर के बाद उसकी न्यूट्रिशन नीड्स में क्या डिफरेंसेस आएंगे. इन सारी चीज़ों को एक डाइटिशियन कवर कर रही होती है.
This is one of the most major thing जो कि dietitian के I would say scope of practice में आती है, जिसकी वजह से एक dietitian is a proper health professional who works in a multidisciplinary team in a hospital in a tertiary care with other doctors and other health professionals. Without a dietitian, a tertiary care hospital would be incomplete. So, a dietitian is a proper healthcare worker who is not only going to educate a general population about nutrition, but also is going to treat people with certain diseases or medical procedures and tell them what are they actually going to have in their diet. This is what a dietitian is. One more thing that I would like to add, dietitians are having multiple degrees, and there are a variety of dietitians that we would, I would say, cover further on in our presentation. The next professional, जिसकी identity अब हम explain करेंगे, that's a nutritionist. The most common thing that people know about a nutritionist is that a nutritionist is a person who's going to talk about what are you going to eat, आपको खाना क्या चाहिए. न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का जो डिस्टिंक्शन आती है वो है ही इस बात पे कि एक न्यूट्रिशनिस्ट वो प्रोफेशनल है जो कि जनरल न्यूट्रिशन एजुकेशन दे रही होती है. A nutritionist is going to talk about what you are going to eat as a healthy individual. Like a pregnant woman, what should she eat? This is what a nutritionist is going to talk about. What a person who is an athlete, who is a swimmer, or who is, I would say, participating in a proper sport, उसे क्या क्या न्यूट्रिशन लेनी चाहिए अपनी बॉडी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ऑन मैक्सिमम स्ट्रेंथ कवर करने के लिए क्या न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, ये एक न्यूट्रिशनिस्ट बात करेगी. न्यूट्रिशनल पर्सनल गोल्स, इंडिविजुअल गोल्स को एड्रेस करती है और जनरल पॉपुलेशन के हवाले से बात कर रही होती है. शी कैन नॉट टॉक अबाउट डिजीज, शी कैन नॉट टॉक अबाउट द मेडिकल नीड्स ऑफ अ पेशेंट. Since because of this reason, nutritionists and dietitians are totally distinctive. एक dietitian तो nutritionist होती है, but एक nutritionist dietitian नहीं होती. Third professional, I would say Excuse me, individual ma'am. जिसको मैं cover करूँगी. Yes. Ma'am, can you please be a little louder? Can you hear me now? Yeah, it's fine. Thank you. Pleasure. So the next professional that we are going to talk about is a food technologist. फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते कौन है? फूड टेक्नोलॉजिस्ट आर बेसिकली प्रोफेशनल्स जिनको हम अक्सर एक फूड साइंटिस्ट भी कह रहे होते हैं. Food technologists are professionals who work to develop healthy and safe food alternatives or healthy and food, I would say, products जो कि आप markets में अक्सर देख रहे होते हैं. ये ना सिर्फ उन products की development पे काम कर रहे होते हैं, they are also working on research areas, and they also make sure that there are healthy or safe substitute for people population in our society. Like इनका main focus जो है food technologist का entirely on the food होता है, the food that you're eating and consuming. They are more concerned to that. फूड से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज होते हैं या इनोवेशंस होती हैं वो सारी एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर होती हैं. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड अ फूड साइंटिस्ट. Similarly, they study a lot of subjects related to agriculture or food development or recipe standardization. ये सारी एक food technologist के jurisdiction के अंदर आती हैं. They are the experts in food. They know A to Z about food. They are more focused to food than to the impact of food on a human body. That's the main difference between a food technologist, a dietitian, and a nutritionist. The prior two professions basically focus on के फूड आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट कैसा करता है और कितना हमें लेना है. और फूड टेक्नोलॉजिस्ट बेसिकली उस फूड की क्वालिटी, उस फूड के बनाने के प्रोसीजर, उसके ऑल्टरनेटिव्स, इनके हवाले से काम कर रहा होता है. Further, what I would like to talk about is the main difference कि एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में फ़र्क क्या है. जैसे कि मैंने पहले के बात कही कि एक डाइटिशियन तो न्यूट्रिशनिस्ट होती है और एक न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन नहीं होती. इस बात के पीछे रीजनिंग क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज प्रोफेशनल्स? न्यूट्रिशनिस्ट एक ऐसा टाइटल है which I'm sure a lot of you have seen a lot of people calling themselves a nutritionist. हर एक जिम ट्रेनर अक्सर बहुत इजीली अपने आप को जो है न्यूट्रिशनिस्ट भी कह रहा होता है, just because they have studied a bit about what to eat to reach your fitness goals, or what to eat to,
reach the protein goals to enhance your lean body mass. उस हवाले से बात करते हुए वो अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट इजीली कह लेते हैं. इसके पीछे वजह ही ये है कि न्यूट्रिशनिस्ट एक ऐसा टाइटल है which is not protected by any law. Anyone can call themselves a nutritionist if they have studied general nutrition or any nutrition science, or they could have a background from any other field as their bachelor degree. They can still call themselves a nutritionist. But in the case of a dietitian's label is legally protected by a governing body which regulates them by conducting an exam. The title registered dietitian cannot be used by anyone. To have that title, you have to complete a proper education, an undergrad degree, and even a postgraduate degree, and then you have to pass a licensure exam जिसे सबसे कॉमनली हम रजिस्टर्ड डाइटिशियन के नाम से जानते हैं. आरडीएन एग्जाम हमें जो है पास करना होता है. उसके बाद ही यू कैन कॉल योर सेल्फ अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन or even a dietitian. If you don't have a degree in nutrition and dietetics, you cannot call yourself a dietitian. And when you pass the registration exam, then you are legally allowed to call yourself an RDN, a registered dietitian nutritionist. This is the main difference between a nutritionist and a dietitian. सिमिलरली न्यूट्रिशनिस्ट को अपने आप को एक्सपर्ट करने की नीड नहीं होती इन द फील्ड ऑफ डायटेटिक्स. दे आर नॉट, आई वुड से, वेल वर्स्ड अबाउट द डिजीज कंडीशन और मेडिकल इश्यूज. एक न्यूट्रिशनिस्ट हेल्दी फूड के बारे में बात कर सकती है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको हरगिज ये नहीं बता सकती कि इफ़ यू आर अ डायबिटिक पर्सन एंड यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, तो आपकी डायबिटीज पे क्या इम्पैक्ट होंगे एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू वॉच आउट. शी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट टू यू, but she can advise you about healthy eating if you are a, an individual which does not have any disease condition, which does not have any comorbidities. तो आप न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं. On the other hand, a dietitian is a practitioner who has achieved national standard for healthcare and education, and uske baghair clinical conditions ko treat karna would be impossible. If a person goes to a hospital for a certain disease, if a person goes for a different a specific surgery, let's say for kidney transplant, after the procedure of kidney transplant, they would be in the need of a dietitian to advise them, to walk them through the path of their, I would say, fitness and dietary regimen, कि अब उन्हें अपनी डाइट को किस तरह रखना है, अपने न्यूट्रिशन को मैनेज किस तरह करना है, एंड सिमिलरली ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अब उन्हें अलाउड हैं या नहीं हैं, या इफ दे आर ऑन स्टेरॉइड्स बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसप्लांट तो उसकी वजह से उनकी नीड्स पे क्या असर होगा, उनके ब्लड लिपिड प्रोफाइल्स में क्या डिफरेंसेस होंगे. ये सारी चीजें एक डाइटिशियन जो है कवर कर सकती है, एक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं कर सकती. दैट्स व्हाई वी से कि एक डाइटिशियन तो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, बट एक न्यूट्रिशनिस्ट एक डाइटिशियन नहीं हो सकती, बिकॉज डाइटिशियन हेल्दी पॉपुलेशन के साथ साथ डिजीज पॉपुलेशन को भी कवर करती है, बट एक न्यूट्रिशनिस्ट एक हेल्दी पॉपुलेशन की जनरल न्यूट्रिशन के हवाले से बात कर सकती है, लेकिन डिजीज पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकती. इसलिए अ डाइटिशियन इज ऑलवेज अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट अ न्यूट्रिशनिस्ट इज नॉट अ डाइटिशियन. I hope the individual professional identities were clear with the previous slides that I elaborated. Now, I would proceed further with the academic and career pathways about all these professionals. In the next few slides, I would be going through the academic background, okay, to achieve that profession, what you have to study, what are the programs, what are the subjects, what is the pathway. I'm going to walk you guys through that. The first professional that we are going to cover is a dietitian. Like, how exactly do you become a dietitian? डाइटिशियन के पास बेसिकली एटलीस्ट एक ग्रेजुएट डिग्री होती है इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी वो ये होगी कि वर्ल्ड वाइड देर आर डिफरेंट नेम्स जिनके थ्रू ये डिग्री जो है कवर हो रही होती है. लाइक उस डिग्री का टाइटल जरूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स हो. इन अ लॉट ऑफ एरियाज यू वुड कम अक्रॉस द डिग्री टाइटल फूड एंड न्यूट्रिशन. इसके अलावा you would come across the title, especially in Pakistan, Doctors of Nutrition and Dietetics. Yeah, you would come across the degree title BS in Nutritional Sciences. So there are different variants जो कि इस डिग्री के नाम से मौजूद हैं. But I would like to clear one thing कि if you have a degree title naming nutrition and food sciences, that is not the degree that would make you a dietitian, because that degree is more focused on food sciences than dietetics itself. उस डिग्री के अंदर अगर डाइटेटिक्स आपको पढ़ाई नहीं जा रही या उससे रिलेटेड अगर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा रहे,
then you won't be a dietitian. और वो subjects कौन कौन से हैं कि मैं further next slide में जो है discuss करूँ. But first, I would like to go through the career pathway that how a dietitian gets the title of a dietitian. First, you would have at least a degree in BS in human nutrition or dietetics. You would have to pass a coursework with theory and labs as well. A dietitian has various labs of dietetics and food science as well. उन labs को pass करके उन theory courses को pass करके they have to take internships in three different areas in their final year, which is clinical dietetics, food service management, and community nutrition. In teen areas where they have to complete specific hours of internship. Then they have their research thesis in the area of dietetics. In any topic of dietetics related to diet and disease condition, they have to cover a thesis. इसके साथ साथ they have to present a poster presentation on their internships on and on their research thesis. And then they have their postgraduate training, which is extremely important. Internships are included in their BS, in their undergraduate program. Internships are totally different. Without their internship, they won't even get a degree in the first place. But after their completing their BS, जब उन्हें degree मिल जाती है, उसके बाद they go through an extensive period of postgraduate training, जिसे हम dietetic training या dietetic internship भी कहते हैं. This is mostly for about 6 months to 12 months. Lekin in most of the cities, especially in Karachi, if I'm talking about Karachi, so at least you have to go through 1 year of training, just like abroad. In other countries like US, Canada, and Australia, आपको 1 साल की डिग्री अपनी ट्रेनिंग जो है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, जिसमें आप इन पेशेंट प्रैक्टिस भी करते हैं, यानी कि इन पेशेंट यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जितने पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं उसकी जितनी भी मेजर सर्विस लाइंस हैं लाइक कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इंटेंसिव केयर, आईसीयू, कार्डियक केयर एंड जनरल सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गायनोकोलॉजी, इन तमाम सर्विस लाइंस की आपकी रोटेशंस होती हैं. इसके साथ साथ यू हैव टू डू आउट पेशेंट प्रैक्टिस एज वेल, यानी कि आउट पेशेंट यानी कि ओपीडीज आपको करनी होती हैं. एंड दैट ओपीडी कुड बी अ जनरल न्यूट्रिशन ओपीडी or it could be a specified OPD, like it could be the OPD of nephrology nutrition, यानी कि वो पेशेंट जिनके नेफ्रोटिक इश्यूज हैं, नेफ्रोलॉजी रिलेटेड, किडनी रिलेटेड इश्यूज हैं, उन वो जो है उस डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं स्पेसिफिकली, वो ओपीडीज भी हो सकती हैं. तो इसमें तकरीबन यू हैव टू कंप्लीट 6 months to 12 months of training. And after that training and completing your training hours, you can apply for your registration exam, the RD exam. And after passing that exam, you can call yourself a registered dietitian, and then you can start your proper job. So I would say that it's more like a 5 years of hard work that you have to go through to become a dietitian. And then you are liable to call yourself a registered dietitian, and you are a health professional who has met all the national standard of healthcare, and a patient's health is now your responsibility to take care of. So what exactly are the subjects जो कि एक dietitian cover कर रही होती है? The most interesting thing that I would like to add here is that in Pakistan and in fact even worldwide, a lot of medical universities offer this degree as well. बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज ये डिग्री जरूर ऑफर कर रही होती हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी. लेकिन इसके साथ साथ होम इकोनॉमिक्स कॉलेजेस भी ऑफर कर रहे होते हैं, नॉट इवन इन पाकिस्तान बट ऑल्सो अब्रॉड इन अदर कंट्रीज, स्पेशली इन यूके एंड आई वुड से यूएस. उधर के होम इकोनॉमिक कॉलेजेस भी इस फील्ड को जो है ऑफर कर रहे होते हैं. मजे की बात यह है कि इस फील्ड की शुरुआत ही होम इकोनॉमिक्स से हुई थी. But the thing that you have to understand here is that a dietitian has studies a variety of courses from nutrition sciences, food sciences, medical sciences, and data sciences as well. They have to cover dietetics, which is obviously our major. ये हमारा major subject है. इसके साथ साथ हम nutrition through life cycle, जो कि healthy population को cover कर रही होती है, कि एक human body के क्या क्या जो है main needs हैं in different stages of life, ये भी हम कवर करते हैं. इसके साथ साथ फूड सर्विस मैनेजमेंट जिसमें हैसप आ जाता है. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हु आर वाचिंग हियर राइट नाउ, बेसिकली उनका एक ये jurisdiction होती है. तो even dietitians cover that as their minor. इसके साथ साथ we cover food science as a minor as well, advanced nutrition, physiology, anatomy, biochemistry, organic chemistry, and pharmacology.
Physiology, anatomy, and pharmacology are basically the subjects that are from medical sciences. These are more important in our degree because obviously a clinical dietitian, if she chooses to practice in a clinical area, so they need to have a well-versed information about how human body actually works. So it doesn't matter if they're graduating from a college of home economics or they're graduating from a medical university, they have to cover these subjects in their degree in order to become a dietitian. So these are the major subjects that a dietitian studies. That's why when a food technologist, whenever they come up and say that they want to work in a hospital, I have seen a lot of food technologists applying in a hospital. So this is what I want to say here. Okay, since you have not studied these subjects, you haven't studied physiology, anatomy, pharmacology, or dietetics. That's why you cannot work as a dietitian at, especially at a hospital. This is the difference that a dietitian actually has. Their coursework is entirely different from a food technologist. That's why they cannot apply at a clinical dietitian's spot. This is what differentiates us, कि हम लोगों की जो कोर्सेज होते हैं वो मेडिकल साइंसेज और फूड साइंसेज और न्यूट्रिशन साइंसेज को मिला के बने हुए हैं. They are not only just focusing on dietetics or food science. Dietitians का skill set क्या होता है? Since I'm a dietitian, so I would be more focusing on this skill set because a lot of people don't understand कि skill sets होते क्या है एक dietitian के. The dietitian not only focuses on, I would say, nutrition counseling. Dietitian की जो सबसे major specialty होती है, that is enteral nutrition. यानी कि एक पेशेंट को नाक की नलकी के थ्रू, नाक की नलकी या किसी भी किस्म की आर्टिफिशियल सपोर्ट के थ्रू न्यूट्रिशन डिलीवर करना. ऐसे पेशेंट्स जो कि ओरली न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, जैसे कि आई वुड से आईसीयू में जो पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर होते हैं, उनकी न्यूट्रिशन कैसे होगी? दैट इज थ्रू इंटेरल न्यूट्रिशन. उन्हें कोई ट्यूब उनके स्टमक में या उनकी इंटेस्टाइन में डिलीवर की जाती है, जिससे उन्हें कोई स्पेसिफिक, आई वुड से, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से जो है न्यूट्रिशन डिलीवर की जा रही होती है. दैट इज इंटेरल न्यूट्रिशन. इसी तरह पैरेंटल न्यूट्रिशन इज द काइंड ऑफ द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज, आई वुड से, कि ऐसे पेशेंट्स जिनको जो है आप गट के थ्रू न्यूट्रिशन दे ही नहीं सकते, जिनका स्टमक या जिनकी इंटेस्टाइन या जिनका मुंह काम ही नहीं कर रहा, या उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें हम थ्रू द रूट ऑफ माउथ एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट न्यूट्रिशन दे ही नहीं सकते, तो उन्हें हम आईवी न्यूट्रिशन देते हैं. तो वो आईवी न्यूट्रिशन बेसिकली एक डाइटिशियन डिजाइन करती है, एक डाइटिशियन प्लान करती है कि पेशेंट को कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट, कितने परसेंट फैट्स और कितने परसेंट अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स दिए जाएंगे, जो कि उस पेशेंट की बॉडी के हिसाब से हैं और उस पेशेंट को फायदा देंगे, ना कि नुकसान. इट इज अ हाई अलर्ट मेडिकेशन. पैरेंटल न्यूट्रिशन इज अ हाई अलर्ट मेडिकेशन जो कि एक फार्मासिस्ट बनाता है, लेकिन उसकी फॉर्मुलेशन जो है एक डाइटिशियन करती है. एंड इफ दैट फॉर्मुलेशन इज आउट ऑफ ऑर्डर या उसमें कोई भी मिस्टेक्स हों, तो द पेशेंट कैन easily fall into a critical condition. पेशेंट को हार्ट एरिथमियाज हो सकते हैं, पेशेंट इनफैक्ट डायरेक्ट कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है. That's why it is a high alert medication and it is a huge responsibility on a dietitian's part. And this is one of the most important skill set of a dietitian that even doctors don't practice. Doctors को ये चीज नहीं specifically आती, that is under the scope of a dietitian. So that's why a dietitian is needed here. इसके अलावा a dietitian understands the drug nutrient interactions. Like there are certain medications जो कि कुछ food items के साथ जो interactions करती हैं. Like अगर उस चीज के खाने के बाद आप ये दवा लेंगे या उस दवा को लेने के बाद आप वो फूड आइटम खाएंगे, तो उसका ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन होगा. जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि एस्पिरिन इज अ मेडिकेशन जो कि ब्लड प्रेशर के लिए ली जाती है. एस्पिरिन के लेने से विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन इनहिबिट होती है. ये ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन एक डाइटिशियन जानती है, ये अक्सर डॉक्टर्स भी नहीं जान रहे होते, या अगर वो जानते भी हैं तो ये अपने पेशेंट को वो काउंसिल नहीं कर पाते. और न्यूट्रिशनिस्ट के jurisdiction में तो ये खैर चीज आती ही नहीं है. दे डोंट नीड टू बी वेल versed in that area since they are not dealing with disease population. So it is one of the most important skill set of a dietitian. इसके अलावा हेल्थ एंड फिटनेस कंसल्टेशन, आई वुड से कि एक क्लिनिकल डाइटिशियन के लिए सबसे आसान चीज़ है. ये एक न्यूट्रिशनिस्ट भी कवर कर लेती है, लेकिन एक डाइटिशियन के लिए ये आसान चीज़ है, जो कि तीन मेन चीज़ें मैंने आपको पहले डिस्कस की. दीज आर द मेन थिंग्स दैट आर अंडर द स्किल सेट ऑफ अ डाइटिशियन. इसके अलावा हैसब कंट्रोल जो कि फूड सर्विस में हो रहा होता है, ये भी एक डाइटिशियन के जो अंदर जुरिस्डिक्शन होता है. जो फूड सर्विस आरडीज होती हैं,
they are well versed with HACCP. They control all the critical control points in a food production area, and they also do the sensory and physical evaluation of food as well, especially in a hospital setup. Every dietitian who works in a hospital not only deals with the diseased areas as well, they also cover the food meals that are served to a patient and make sure that they are up to the mark, and उस पेशेंट को ऐसी कोई भी चीज नहीं जा रही जो कि उसे नहीं जानी चाहिए. इसके अलावा डाइटिशियन also studies recipe standardization in order to teach the healthy population about healthy alternatives, or the disease population about disease, I would say, food areas, like डाइट, आई वुड से डाइट बाखर खानीज या डाइट बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें बहुत सारी डाइटिशियंस अपने, आई वुड से, एज अ फाइनल ईयर थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट भी जो है प्रेजेंट कर रही होती हैं. तो रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन इज ऑल्सो अंडर आवर ज्यूरिसडिक्शन. इसके अलावा मील प्लानिंग और रिसर्च भी जो है डाइटिशियंस के स्किल सेट के अंडर आता है, बिकॉज वी ऑल्सो स्टडी स्टेटिस्टिक्स एज वेल. The other most important slide in today's training is how to become a registered dietitian nutritionist. बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, इनफैक्ट who are dietitians as well, कि okay, someone asked to explain public speaking. I forgot to explain that. A lot of dietitians, if you have seen, go through different medias where they talk about the nutrition process, or they guide people about nutrition. That is also public speaking. Like I would say, I have my own platform where I would say speak on the behalf of nutrition and nutrition issues, disease processes, उनके हवाले से मैं बात करती हूँ, like kidney issues में क्या nutrition होनी चाहिए, या in hypothyroidism क्या nutrition for the population है. इन चीज़ों के बारे में अगर मैं public speaking कहीं भी कर रही हूँ, मैं इनके बारे में जाकर बात कर रही हूँ, तो that comes under public speaking. So dietitians also have appearances on different media, I would say mediums, like they would not only come on TV channels or radios. इसके अलावा they try to educate people through print media as well, or through social media. So that's also one of our skills. We are also required to educate people, and in fact we also have internships. हमारी जो community nutrition internships होती हैं, in that we are required to go to specific places and educate people about it. So this, all of this comes under public speaking. So public speaking is also one of our major skill that we have to cover in order to become a dietitian. So back to the next slide that I was trying to discuss, the slide about registered dietitian nutritionist. एक dietitian अपने आप को register कैसे करवाती है. So मजे की बात ये है कि RDN exam is not easy to pass. इसकी सबसे मजे की बात ये है कि RDN exam को पास करने के लिए we have to cover all the subjects that we have studied in our 4-year degree program. We have to study clinical nutrition again. We have to cover public health, nutrition sciences, food service management, and food science. इन 5 सेक्शन पर मुश्तमिल हमारे पास 100 मार्क्स का एक पेपर आता है, जिसमें से तमाम सेक्शंस में से स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, और इसे पास करने के लिए हमें ओवरऑल 100 क्वेश्चन में से 50% मार्क्स भी चाहिए होते हैं, और इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी 50-50% हमें अटेन करने होते हैं. यानी कि लेट्स से इफ आई अपेयर्ड इन द आरडीएन एग्जाम, इसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड दिखा देती हूँ. This is the mark sheet that I got from Pakistan Nutrition and Dietetic Society. It is basically the society जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त RDN I would say टाइटल दे रही होती है. पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सोसाइटी के अलावा इस वक्त ऐसी कोई नेशनली रिकग्नाइज सोसाइटी है नहीं जो डाइटिशियंस को रजिस्टर करती हो. तो आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड डाइटिशियन फ्रॉम पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सोसाइटी. So to pass that, I appeared in the exam and I had to gain at least 50 marks out of 100. और इसके साथ साथ मुझे न्यूट्रिशन साइंसेज में से at least 8 मार्क्स लेने थे. क्लिनिकल न्यूट्रिशन मुझे at least 8 मार्क्स लेने थे. पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में से at least 6 मार्क्स लेने थे. फूड सर्विस और फूड साइंस में भी 4 मार्क्स मुझे at least लेने थे, with the overall 40 in order to pass this exam. If I had failed any part of this exam, like अगर मैं फूड सर्विस के पार्ट में से 50% मार्क्स नहीं लेती, 4 मार्क्स अगर मेरे फूड साइंसेज में से नहीं होते, तो मैं ये एग्जाम पास नहीं करती, मैं फेल हो जाती. That's why a registered dietitian has to gain
all the marks from these areas. अगर किसी भी एरिया में आपकी नॉलेज कम हो, अगर आप पब्लिक हेल्थ में कम मार्क्स रखें, अगर आप फूड साइंसेज में कम मार्क्स रखें, तो आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन नहीं बन सकते. This is one of the trickiest part of this exam, that you have to gain the 50% marks of all these areas, and you have to take at least 50 marks from 100 marks as well in order to pass this exam. And after passing this exam, you have to renew your RDN status after every 48 months, that is 12, I would say 12 months, 2 years. After every 2 years, you have to renew your registration by taking all the CNEs, yani ke certificate in nutrition education. You have to take the CNEs as well. आपको different lectures देने होते हैं by PNDS and by other hospitals or other organizations in order to keep your RDN credential status active. अगर आप वो hours fulfill नहीं करेंगे, आपकी registration expire हो जाएगी, and you cannot call yourself a registered dietitian no longer. So you have to keep studying. Like doctors, we keep studying. We have to take sessions, webinars, and events in order to keep our registration status intact. RDN एग्जाम अगेन आई वुड लाइक टू ऐड, बहुत सारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी मुझसे पूछते हैं वेदर दे कैन अप्लाई फॉर दिस. बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट भी पूछते हैं, या फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स भी मुझसे पूछते हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन में कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ होता है, कि वेदर दे कैन अप्लाई फॉर दिस. सो आई वुड से नो, बिकॉज इस एग्जाम में अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही ये कि इन पाकिस्तान यू हैव टू कंप्लीट योर बैचलर्स डिग्री इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एंड यू हैव टू कंप्लीट अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग. यानी कि इंटर्नशिप्स आप काउंट ही ना करें, वो तो आपके पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, आपके ग्रेजुएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके लिए लाजमी होना चाहिए इन क्लिनिकल, इन फिटनेस और इन ओपीडी एरियाज, या इवन इन एजुकेशन एरिया. देन यू कैन अप्लाई इन दिस एग्जाम. अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप आरडीएन के लिए एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस काउंट करना होगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम. एंड अगर आप इस एग्जाम के तमाम क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं, आप इसके पांचों सेक्शन में 50% मार्क्स गेन करते हैं, एंड ओवरऑल 100 क्वेश्चंस में से 50% मार्क्स आपके होते हैं, तो आप ये एग्जाम पास करेंगे. वरना you have not passed this exam and you cannot become a registered dietitian. So this is one of the most important thing to understand here, that you have to fulfill all these criterias, and then after gaining this title you have to keep up with all the credit hours in order to keep your title. This is all the brief that I have given you guys about the career pathway and academic background of a dietitian. I hope it was all clear to you all. The next profession that I'm going to discuss here is a nutritionist. एक nutritionist का career pathway क्या होता है? One of the most important thing that I would discuss here is that कि nutritionist की भी proper degrees होती हैं. Qualified nutritionist भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले के बार डिस्कस की थी कि कोई भी अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट कह सकता है, वो बात अलग है. लेकिन दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग कि अगर आपका सामना किसी एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से हो जिसके पास बैचलर्स इन न्यूट्रिशनल साइंसेज मौजूद हो. There are certain universities, especially in Pakistan, who are offering bachelors in nutritional sciences, especially in nutrition and public health. So, one of the university that I know about is Dow University of Health Sciences, that offers a bachelor's in nutritional sciences, and the students who are studying there specialize in public health. Those are public health nutritionists. In their course of study, they study nutritional sciences, a group of courses throughout their degree. Then they go through an internship. Then they cover a research project. It could be anything on their behalf. Usually they have to conduct a research in an organization, and then they can go towards their postgraduate studies. This is how a nutritionist works in Pakistan. Lekin in abroad, a nutritionist has to cover at least a postgraduate. एक न्यूट्रिशनिस्ट को न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए एटलीस्ट एक एमएस करना पड़ता है. देयर आर अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु कैन आल्सो कॉल देमसेल्व्स अ न्यूट्रिशनिस्ट. उनकी भी यही बात है कि वो अपना एमबीबीएस उनका एक मेडिकल साइंसेज में है,
उसके बाद वो अगर अपना पोस्ट ग्रेजुएट एमएस अगर वो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में करते हैं, या लेट्स से कि अगर वो अपना पोस्ट ग्रेजुएट in sports nutrition karte hain, so they can call themselves a nutritionist and they are qualified nutritionists, but they cannot call themselves a dietitian because they have not studied disease and their interactions. So they are nutritionist and they are still different. They cannot call themselves a registered dietitian nutritionist. So that's the difference again that I would say between a nutritionist and a dietitian, because you can see here कि उनका जो career path है it's totally different than of a dietitian. The graduate coursework that a nutritionist goes through is a nutritionist studies a lot of variety of subjects from nutrition sciences, from policy and data sciences, and from research as well. उनके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के अलावा रिसर्च सब्जेक्ट्स भी मौजूद होते हैं. The common subjects that I know of, especially in the university that's offering a course for public health nutritionists, is epidemiology. They study introduction to epidemiology. They study about environmental health. They study public health nutrition. They also study nutrition problems in developing countries, like third world countries में क्या nutrition problems हैं, like anemia, rickets or beriberi. What is their impact? What is their I would say इंसिडेंट्स इन दीज कंट्रीज. आपके पास जितने भी नेशनल न्यूट्रिशन सर्वेज होते हैं, इन सबको करने वाले बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं. नॉट सिर्फ डाइटिशियंस, डाइटिशियंस तो होते ही हैं लेकिन इसके साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी काम कर रहे होते हैं. दे आर ऑल्सो वर्किंग इन दीज एरियाज. इसके अलावा पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, पॉलिसीज किस तरह फॉर्म होती हैं किसी कंट्री की, दिस इज ऑल्सो under a nutritionist coursework, graduate coursework, they cover that. इसके अलावा one of the most important thing that I would highlight here is sports nutrition. ये लोग अपने course outline में sports nutrition भी cover कर रहे होते हैं. That's why they can also deal with athletic population if they have studied sports nutrition and exercise as well. The next, I would say, professional that I would cover is food technologist. I'm sure a lot of you are well versed in this area because most of the population that is listening to me right now, as per my information, are food technologists. So I'm sure you must be well aware of how this pathway works. तो मैंने इसके ऊपर just छोटी सी slides बनाई हैं, and I had to do a little bit of research myself, thanks to a food science technology student who helped me with this. I had to consult a student to ask कि आप लोगों का क्या criteria होता है in order to understand more about this profession as well. I'll be honest about that. So what I got to know is that कि इनके पास at least एक graduate या post graduate degree होती है in food sciences and technology. They do their BS in food science and technology. इसके साथ साथ ये अपनी एक अंडर ग्रेजुएट जो है इंटर्नशिप्स भी कवर करते हैं during their graduation. इसके बाद they have to present a final year project. It could be a research based project or it could be something which I would say a researched product as well that they could launch in market. So what I got to know was that usually their FYPs are focused on a research product, a food product that could be launched in market or that could have that could be launched in the long run, that could be proposed to any industry to be as their potential product. This is what their final year project could be like. And iske alawa, I have also heard that they could just do some research on a potential product as well. So this is how a food science technologist basically gains their bachelor's degree in order to called a food scientist, a food technologist. This is their career path. If I go through their graduate coursework, they study a variety of courses from food sciences, nutrition sciences, and agriculture. I was extremely surprised to get to know that a food scientist not only studies food, इसके अलावा they also cover a few subjects from agriculture as well. And I was really surprised and happy to know that because मुझे ये बात नहीं पता थी. These are some subjects जो कि एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट अपने स्टडी एरियाज के अंदर पढ़ रहा होता है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन. The common subjects here are food processing and preservation, community nutrition, food plant layout and design, food microbiology, food safety, cereal technology, sugar technology.
बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, मुझे ये बात नहीं पता थी कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी ये चीज़ कवर कर रहे होते हैं. They also study food laws and regulation. That's why I believe they are in food governing bodies and authorities. That's why maybe. And इसके अलावा they study processing as well of different food groups like food process engineering, fish, poultry, egg, foods, fruits and vegetables, stored grain, and pest management. These are basically the core courses that in my information a food technologist covers. इसके अलावा भी अगर ये लोग जो है कोई और सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ते हैं जो कि मुझे आप लोग खुद भी बता सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू enhance my information about that, because I am not a food technologist, I am a dietitian. So you are the ones who are actually the, I would say, experts in this field. This is my limited knowledge, and as per my knowledge, this is what I have come up with. So if there is anything that you would like to add, please feel free to mention in the comments, and I would be most pleasured to get to know about it. So next thing is, what is the scope of practice? हमने ये तो पढ़ लिया कि डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट करते क्या है, लेकिन पढ़ते क्या है, लेकिन अब वो करते क्या है इसके हवाले से अगर हम बात करना चाहेंगे, तो अब वो हम आगे की स्लाइड्स में कवर करेंगे कि इन सब को पढ़ने के बाद आप करेंगे क्या. What would be your scope of practice? Where would you be employed? आपके जॉब टाइटल्स क्या होंगे? The first professional that I would cover here is a dietitian. Dietitians की बहुत सारी types होती हैं. अगर dietitian एक hospital में काम करती है with diseased people, that is a clinical dietitian. If a dietitian is governing, is working in a food service for the food production, controlling HACCP and standardizing recipes for them, that is a food service dietitian. And if a dietitian is working in a community, like let's say कि किसी स्कूल में है, किसी यूनिवर्सिटी में डाइटिशियन मौजूद है जो कि वहाँ के बच्चों की, वहाँ के लोगों की काउंसलिंग कर रही है न्यूट्रिशन, या उनके न्यूट्रिशन इश्यूज को जो है डील कर रही है, या इफ अ डाइटिशियन इज एम्प्लॉयड बाय एनी कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर देयर एम्प्लॉयज, सो दैट डाइटिशियन वुड बी अ कम्युनिटी डाइटिशियन. उसका स्कोप वहाँ की पॉपुलेशन की, डिजीज पॉपुलेशन को या हेल्दी पॉपुलेशन को न्यूट्रिशन एजुकेशन या न्यूट्रिशन सोल्यूशन देना है. दैट वुड बी अ कम्युनिटी डाइटिशियन. इसके अलावा देर आर रिसर्च डाइटिशियंस एज वेल, जो कि लेट्स से इफ यू हैव हर्ड अबाउट यूनिसेफ और वर्ल्ड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनके होने की जो रिसर्चेज होती हैं, वहाँ पर जो डाइटिशियंस एम्प्लॉयड होती हैं, those are research dietitians. These are the major dietitians that we go through. One thing that I would like to add here is that clinical dietitian itself has a lot of varieties. पाकिस्तान में इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड भी एक डाइटिशियन, लाइक आई सेड, डिफरेंट एरियाज ऑफ हॉस्पिटल में काम करती है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग, मैंने तमाम मेजर सर्विस लाइंस को कवर किया है. आई हैव वर्कड विद हार्ट पेशेंट्स, आई हैव वर्कड विद किडनी पेशेंट्स, आई हैव वर्कड विद कैंसर पेशेंट्स, आई हैव वर्कड विद पेशेंट्स विद डिफरेंट सर्जरीज, जिनका लेट्स से स्टमक रिमूव हो गया हो, या जिनके माउथ की किसी किस्म की सर्जरी हुई हो, या ऐसे पेशेंट्स जो कि किसी गन शॉट इंजरी के बाद हुए हों, या वो किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद आए हों. I have worked with different patients, so I have practiced with different areas of hospital, with different areas of diseased people. That's why I am an overall clinical dietitian, and I can easily rotate in any area. Like currently I'm actually working with the team of infectious disease and internal medicine. I'm specifically overseeing a COVID nutrition ward, a कोविड पेशेंट वार्ड. तो वहाँ पे मौजूद जितने भी पेशेंट हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज के साथ साथ डिफरेंट कोमोबिड्स के साथ आते हैं. बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि कैंसर पेशेंट्स हैं, वो कोविड के साथ आए हुए हैं. तो आई नो हाउ टू मैनेज देयर डिजीज एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर डिजीज प्रोसेस. इसके साथ साथ वो इस बीमारी के साथ, जिस बीमारी के साथ अभी आए हुए हैं, मैं उसे भी कवर कर सकती हूँ. सो आई एम एन ओवरऑल तमाम एरियाज को मैं कवर कर रही हूँ. बट इन अदर कंट्रीज एज वेल, या इवन इन पाकिस्तान जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की है, वहाँ हर सर्विस लाइन की एक अपनी स्पेसिफिक डाइटिशियन भी मौजूद थी. यानी कि नेफ्रोलॉजी, किडनी इश्यूज के लिए एक अलग डाइटिशियन स्पेसिफिक मौजूद है जो कि सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को देखेगी. उससे ये होता था कि उस अपनी डाइटिशियन की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, वो डाइटिशियन सिर्फ उस एरिया को फोकस कर रही होती है, एंड वहाँ के डॉक्टर्स ऑल्सो गेट टू लर्न फ्रॉम दैट डाइटिशियन. डाइटिशियंस ऑल्सो give lectures to different doctors and nurses about nutrition because they don't have much idea about nutrition.
सो क्लिनिकल डाइटिशियंस की मल्टीपल टाइप्स भी होती हैं फूड सर्विस आईडीज के अलावा. आई वुड से ऑन्कोलॉजी डाइटिशियन, नेफ्रो डाइटिशियन, कार्डियक डाइटिशियन, जर्नल सर्जरी डाइटिशियन. डाइटिशियंस की भी अपनी अपनी टाइप्स मौजूद होती हैं इन क्लिनिकल डाइटिशियन एरिया. इसके बाद हम आए न्यूट्रिशनिस्ट पर. न्यूट्रिशनिस्ट जो क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ. क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बेसिकली पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जिनके बारे में मैंने अपनी फर्दर स्लाइड्स में भी प्रीवियसली डिस्कस किया था, जो कि पब्लिक हेल्थ इश्यूज पर बात कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद होते हैं हु हैव एन एमएस, अ मास्टर्स डिग्री इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि बेसिकली एथलीट्स के साथ जो है वर्क कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ देर आर रिसर्च न्यूट्रिशनिस्ट जो कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं. देर आर ऑल्सो कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल, जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज में जाकर डाइटिशियंस के साथ मिल के न्यूट्रिशन जो है आई वुड से वेल बीइंग के लिए काम कर रहे होते हैं. तो कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं. इसके अलावा there are some holistic nutritionists as well. One thing I would like to say here is that holistic nutritionists are not exactly qualified. कोई भी ऐसा शख्स जिसने न्यूट्रिशन पढ़ ली हो और वो डिफरेंट होलिस्टिक अप्रोचेस की तरफ जा रहा हो वो अपने आप को इजीली होलिस्टिक न्यूट्रिशन कह सकता है. बट इन माय ओपिनियन दीज आर नॉट एग्जैक्टली क्वालिफाइड, तो प्लीज डू नॉट सीक any sort of disease based information about nutrition from a holistic nutritionist. Please avoid that. हमारे पास पाकिस्तान में holistic nutritionists are very common, but I would say that they are not specifically qualified to understand the basic medical needs of their clients. So they are just, I would say, not exactly reliable and not exactly qualified because इनकी कोई specific degree नहीं होती. So I would say कि please don't rely on them. Then come the food technologist, and what I got to know, I had to ask, especially QA Learning Hub, their team member to help me out about the job scope of food technologists because मुझे limited पता था. What I knew already was that के food technologists are employed in quality control areas. इसके अलावा food safety auditors, मुझे सिर्फ इन दो की बारे में information थी. But technically जो बात reality में है वो ये है कि food technologists have a lot of scope when it comes to their profession. They are not exactly just in quality control and assurance, they are as food production managers as well. They work as food safety auditors. They work as research and developmental officers as well. They work in procurement and purchasing managers or as food engineers. So these are just a few professions that I came to know. You can also check out QA Learning Hub's video on this topic of job scope of food technologists because this is what I referred to when I was planning this slide because I was limited when it comes to your scope. But then again, you guys are the masters of your field. If you have any other job scope in your mind or in your information, please feel free to even share that with me as well because I don't know much about that. I would be much more pleasure to know about that as well. But this is the limited areas that are in my knowledge, and it is presented here in this slide. So, with this, I believe this is the time of questions because I am technically done with my presentation, and I hope I was able to clear all your confusions about today's topic. If there are any questions, you are most welcome to ask me, and I'll be answering them from now on. Thank you so much, ma'am. The session was very informative and was very well delivered. Now, if any of you have questions regarding this session, feel free to contact us at qalearninghub@gmail.com. You can also see the email address on your screens. We would love to respond your queries as soon as possible. The topic of today's session was chosen on the repeated request of our audience, and we thought it was necessary to conduct this session as there are a lot of myths and misconceptions revolving around regarding these professionals. So
I think our trainer has addressed all those in a very fulfilling manner. Thank you so much, ma'am, once again. Pleasure is all mine. Pleasure is all mine. And I would say that thank you so much for inviting me today to speak from your platform. And I hope I was of any help to the audience. आप लोगों के जितने भी questions थे, I hope I addressed them fully. Thank you, ma'am. Now, I would say it's time for attendance again. Those who marked their attendance using the link at the start of the session are requested again to please comment in the chat box below with their names and write present. I repeat, जिन्होंने पहले शुरू में attendance mark की थी, they should again write in the chat box present with their names. This is to verify that the people who took the sessions, uh, this session, उन्होंने शुरू से end तक they stayed with us. And only those people who will comment in the chat box will get the certificate. Yes, please comment in the chat box with your names. Our team would our team would note this, and only these people will get the certificate. You have got 1 minute to do that. Everyone, please comment your names with present. I'll tell you about the certificates, but before that, there's an important announcement. We have launched a phased training course which is designed for organizations willing to get benefit by understanding good manufacturing practices requirement. अगर आप लोग को अपने वर्कर्स स्टाफ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि आप लोग इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें. You can contact us at the same email address qalearninghub@gmail.com, or you can contact our group admin Sadia for more information regarding this. This course is basically divided into two levels. The first one is the basic level, which includes 4 gears. The first one is personal hygiene, cleaning and sanitation, pest management, material handling, storage, and movement. This was the first level, which was the basic level. Now, the second level is the advanced level, which comprises also of 4 gears. The first one is the management system. The second one is HACCP, which is hazard analysis and critical control point. The third one is food safety management system. And the last one is internal audit. As you all know that we previously conduct exams at the end of our session, but today this session was in a different context, and it was a different learning experience for you guys. So we find there's no need to conduct the exam today because this was another type of experience for you guys, and we did it on the request of our audience. So there's no exam today, but the good news is everyone who registered and marked their attendance will get the certificate of participation. The soft copy of the certificate will be sent to you on the WhatsApp groups within 2 to 3 days. So please be patient and wait for your certificates. The certificates will be sent to you on the WhatsApp groups. Stay tuned on your WhatsApp groups. आप लोगों को सर्टिफिकेट्स सॉफ्ट कॉपी जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क की है व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे. So this marks the end of our healthy session. We'll catch you up soon with
another activity. Thank you very much for staying with us. Allah Hafiz.